हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग फिर से एक लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज की जो डेली चैलेंज है बहुत इंटरेस्टिंग है। गिवन अभी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने से पहले जस्ट कंस्ट्रेंट्स दिखाता हूँ। तो कंस्ट्रेंट्स अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, कंसिडरिंग द एज केसेस, हाउ डू यू हैंडल द एज केसेस एंड ऑल। सो इट्स मोर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। सो एवरी टाइम व्हेन यू सी दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज इंटरव्यू में तुम्हें जो है बहुत सारे एज केसेस सॉल्व करने होते हैं। सो इन इंटरव्यूज़ मोस्टली इंटरव्यूअर्स वांट टू सी, लेट्स से, how do you handle the edge cases? Can you think of edge cases, and what's the basically how do you think about the problem and all? यहाँ पे जो है अगर तुम रन टाइम का देखोगे तो जो कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स the time complexity and the space complexity does not matter. It's all about the implementation, how you write the code, whether your code is production level ready code or not. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब ऐसे बहुत ज़्यादा एज केसेस वाला कोई प्रॉब्लम आती है तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एकदम फट 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 जहाँ पे जो समझ में आता है, जो कंडीशन समझ में आई वहीं पे लगा दी। एंड दे डू नॉट केयर अबाउट, लेट्स से, the readability of the code and the, so when I say the production level ready code, that means ki code is easy enough to understand, easy enough to, let's say, grasp. If, let's say, someone in your team joins newly, let's say, if you are onboarding a new user in your team, can they really understand the code by just reading the code what you've written? तो इस प्रॉब्लम को इसलिए हम लोग, एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से, ये प्रॉब्लम जो है इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है, बिकॉज इट हैज टू मेनी एज केसेस। कूल। सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। इट्स अ मीडियम प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू आर गिवन एन इंटीजर नंबर ऑफ यूजर्स representing the total number of users and array events of size n cross 3 times। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को रीफ्रेज भी किया जा सकता है। तो जैसे अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम लोगों ने स्लैक यूज़ किया है, तो स्लैक हैज़ ऑल ऑफ दीज कैपेबिलिटीज वेर यू कैन मेंशन ऑल ऑनलाइन यूजर्स। Alright, so let's say if Slack wants to track how many users a particular, how many times a particular user was mentioned, then they will basically reframe this question in that way. तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी चेंज हो सकती है। एंड यूजुअली इंटरव्यूज में क्या होता है कि तुम्हें एक बहुत लंबा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं, एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से तुम्हें पार्स करना होता है कि व्हाट्स रेलेवेंट टू यू एंड व्हाट यू कैन सॉल्व इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी लैंग्वेज में रिफ्रेज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट रिलेट्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एज वेल। तो वहाँ पे अगेन अगेन इंटरव्यू स्टाइल प्रॉब्लम बन जाती है। वाई? बिकॉज यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन व्हाट्स रेलेवेंट टू यू। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक इंटीजर दे रखा है, नंबर ऑफ यूजर्स, विच डिफाइंस हाउ मेनी यूजर्स आर देयर इन दिस सिस्टम। And there are two types of events, and we are also given a events array which has two types of events. First one is message, which basically tells you message, the timestamp, and the mention string. Here the mention string again can have multiple values. First one is all. So basically you need to mark all the users in the system as mentioned. Here is, you need to mark only the online users as mentioned, and the third one is ID, and then the actual user ID. And this number will be between, obviously, the IDs which we represented initially, so between 0 to number -1. All right, तो हमें अगर ये दोनों नहीं है, दैट मीन्स यू विल हैव द थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम लोगों को बेसिकली क्या है कि पार्स करनी है वो एक स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को पार्स करके जितनी भी आईडीज उसमें मेंशन है, you have to mention them, basically you have to mark them as mentioned. Now within a single string you can have
same user ID appearing multiple times, in that case what you need to do, you need to consider it every time it's mentioned. So यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, there can be multiple IDs separated by a single white space and may contain duplicate, and this can even mention for offline users. तो जरूरी नहीं है कि सारी IDs ऑनलाइन ही होंगी, कुछ IDs ऑफलाइन भी हो सकती हैं इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट इज ऑफलाइन. Offline basically marks a user offline at timestamp t and the ID of that user. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास में मैसेज था, टाइम स्टैम्प था एंड दी दिस मेंशन स्ट्रिंग आई, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ return an array mentions where mention I represents the number of mentions the user with ID I has across all the message events. तो बेसिकली हम लोगों को एक आउटपुट एरे जो है वो रिटर्न कर रहा है विच टेल्स द सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर user ID, let's say I, how many times that user was mentioned, that will be represented as mentions I. Some constraints: all users are initially online, and if a user goes offline or comes back online, their status change is processed before handling any message that event occurs at the same timestamp. तो आई थिंक फर्स्ट लाइन देखते हैं कि सारे यूजर्स को हम लोगों को इनिशियली जो है ऑनलाइन मार्क करना है. इफ अ यूजर गोज ऑफलाइन और कम्स बैक ऑनलाइन, their status change is processed before handling any event. That means for a particular timestamp, let's say if you have multiple events, ठीक है, तो तुमको आइदर उसको मार्क करना है ऑफलाइन और मार्क करना है ऑनलाइन बिफोर यू एक्चुअली प्रोसेस द मैसेज इवेंट. दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग. सो हियर इफ यू लुक, अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल डिस्कस दिस कंस्ट्रेंट. नोट दैट अ यूजर कैन बी मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल मैसेज इवेंट एंड ईच मेंशन शुड बी काउंटेड सेपरेटली. तो हम लोगों ने जो यहाँ पे डिस्कस किया था कि लेट्स से इफ एक मैसेज इवेंट में सेम यूजर आईडी इज बीइंग मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स, देन यू नीड टू काउंट दैट आईडी मल्टीपल टाइम्स एज मेंशन्ड. ठीक है, इसके अलावा क्या है, बिफोर हैंडलिंग, आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ़ अ यूज़र गोज ऑफलाइन और ऑनलाइन, देन देयर स्टेटस चेंज शुड बी प्रोसेस्ड बिफोर हैंडलिंग एनी मैसेज इवेंट. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से तुम्हारे पास फॉर अ पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प मल्टीपल इवेंट्स दे रखे हैं, लेट्स से इट कैन बी ऑफलाइन और बेसिकली मल्टीपल ऑफलाइन इवेंट्स फॉर द सेम सेम टाइम स्टैम्प, तो तुम लोगों को पहले ऑफलाइन इवेंट्स जो है बेसिकली प्रोसेस करने हैं. और यहाँ पे उसने ये भी बोला है कि व्हेन अ यूजर गोज ऑफलाइन, then it goes offline for 60 seconds of unit, and after 60 seconds this user comes back online. So जब भी तुम कोई मैसेज इवेंट प्रोसेस करने जा रहे हो, you need to figure out whether there is any user in the system which was offline earlier, but because the 60 seconds have passed, so now we need to make sure that this user comes back online again. So that's what this condition is saying. If let's say some auto online situation is happening, basically we need to mark some user online, so marking should happen first before we process the message event. And if you're marking some user offline, then you need to mark offline first and then process the event, process the message event. All right. कंस्ट्रेंट देख लेते हैं एंड देन विल लुक एट द एग्जांपल्स. तो तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट क्या क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ यूजर्स जो है लेस देन 100 है, इवेंट्स की जो लेंथ है वो भी लेस देन 100 ही है, ईच इवेंट विल हैव 3 एलिमेंट्स एंड इवेंट्स I0 विल बी आइदर मैसेज और ऑफलाइन, और इवेंट्स मतलब जो टाइम स्टैम्प दे रखा है, द टाइम स्टैम्प विल बी लेस देन 10⁵ which is less than 1 lakh. And the number of ID comma mentions in any event is between 0 to 100.
तो एक इवेंट में मोर देन 100 आईडी से ज़्यादा मेंशन नहीं होंगी इफ लेट्स से दिस वाज द केस वेयर यू हैव टू लेट्स से पार्स द यूजर आईडीज मेंशन्ड इन द मैसेज इवेंट. And what is this condition? या आई थिंक ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आईडी है, द यूजर आईडी विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to number of users minus 1. Basically, IDs start from 0 and go till number of users minus 1 in the system, and it is guaranteed, the last one is important, it is guaranteed that the user ID referenced in the offline event is online at the time of event, at the time when the event occurs. That means system generated test cases will always make sure when, let's say, when a user is marked offline, this user was online before. All right, so they will not, let's say, give you a user ID which was marked offline, and then they will give you the same ID again, maybe on a different timestamp, but it has not come online uh, from let's say from 60-second window. ठीक है, तो पहला एग्जांपल को देखते हैं. ठीक है, लेट्स से, सो दिस इज, ओके 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 ओके, ठीक है. सो दिस इज योर एग्जांपल. तो तुम्हारे पास जो है दो यूजर्स हैं सिस्टम में, 0 एंड 1. इनिशियली बोथ आर ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन. एक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे उसने तुम्हें एट टाइम स्टैम्प एट t इक्वल टू 10 इट सेज कि जो ID 1 है और जो ID 0 है दे वर मेंशन्ड. तो लेट्स कीप अ ट्रैक ऑफ जो क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग सिंपली वही करेंगे. यहाँ पे कोई बहुत एक्स्ट्रा लॉजिक होने वाला नहीं है, बट कंडीशंस को हम लोगों को हैंडल करना होगा सेपरेटली. ठीक है, तो टाइम स्टैम्प टी पे अभी हमारा कोई भी यूजर ऑफलाइन नहीं है, ऑल द यूजर्स आर ऑनलाइन. Message says these two users were mentioned in this message ID, then at this timestamp. So what we do is, let's say this map or vector or array keeps a track of how many times a user has been mentioned so far. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 कर देंगे, यहाँ पे भी इसको 1 कर देंगे. नाउ कम टू दिस इवेंट. ठीक है, एट t इक्वल टू 11, at t equal to 11 it says user 0 was marked offline. तो अब हमें क्या करना है, 0 को ऑफलाइन मार्क कर देना है. सो 0 इज मार्क्ड ऑफलाइन. सो ऑनलाइन ऑनलाइन जो मैप है इट विल ओनली हैव 1 because 0 was marked offline, and because this was marked at timestamp 11, because we said earlier a user which has been marked offline will come online after 60 seconds. All right, 60 seconds. So it was marked offline at 11. We need to give buffer time of 60 seconds. Then what we'll say is at t equal to 71, this user will come back online again. Now, when this user comes back online, we need to first process this online coming activity, like the question mentioned here. If a user goes offline or comes back online, their status change should be processed before handling any message event. So here, because the user ID 0 went offline at t equal to 11, we need to give buffer of 60 seconds. So after 60 seconds, which will be 11 plus 60 is 71. So at t equal to 71, this user ID will come back online. All right. So our count does not change. Count remains same. In this message event, what they did is simply mark a user ID as offline.
Now the third event, let's process this third event. So at t equal to 71, so see, at t equal to 71, so first we need to mark this user back online again. So at t equal to 71, we mark this user as online. All right. So 0 became online again and 1 was online already. Cool. And then it says what? Here. So like we discussed in the question, here simply means mark or mention all the online users. So at this time we have both the IDs 0 and 1 as available. So we'll simply increment the count. So earlier the count was this, now it will be 0 because 0 was again mentioned because it was online, and 1 was mentioned because again it was online. So you need to return 2 comma 2. Why? Because 0 was mentioned 2 times and 1 was also mentioned 2 times. Let's see the answer. So answer is 2 comma 2. Now let's discuss this one as well. ठीक है, एक सेकेंड में इसको जो है एक सेकेंड, ठीक है. So let's see. So before we start, we first need to mark all the users in the system as online. Cool. So we have how many users? 2 users. So I'll just write online. So 0 and 1. Now we first process the offline event. So at t equal to 10, all right, t equal to 10, we need to mark id 0 as offline, and the count, let's say I'll call this as answer. So 0 and 1, and initially no one has been mentioned so far. So at t equal to 1, we need to mark id 0 as offline. So now at t equal to offline, I'll just write off for offline. थोड़े दिन की बात है, आई थिंक ये मेरा जो माउस है मैं इससे ड्राइंग कर रहा हूँ. वंस आई हैव दी पेंसिल अवेलेबल, तो मैं उसके बाद में जो है अगेन क्या बोलते हैं, पेंसिल से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दूंगा, तो पेंसिल से ड्राइंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. सो ऑफलाइन विल बी 0 एंड ऑनलाइन remains 1. Cool. Now this id was marked at t equal to 10, we need to give buffer of 60 seconds. So at 70 seconds, this will become online again at 70, t equal to 70. So now let's process the second event. So second event is what? At t equal to 12. So at t equal to 12, all the online users were mentioned here. So what do? Here we simply uh, increment the count of online users. So we only have one online user at t equal to 12, because at t equal to 12 we cannot move offline users to online. So we only have one. So this becomes 1. So we return answer 0 and 1. Yeah. So I think this is the case. Now couple of things to note here. One, these are the constraints. All right. Uh, 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 these are the constraints. So if you look at these constraints, basically question never mentioned that the incoming events that you have will be sorted by timestamp. So that means, let's say system can give you at t equal to 72 timestamp event first, then can give you at t equal to
timestamp 1, then can give you 3, 20, let's say 75, 45, something like this. So if we process all the events as they are given, we'll simply get the wrong answer. Why? Because you need to process the events in the increasing order of the timestamp. If you process uh, the event with the timestamp 72 first, then you did not consider this state of the system first. So that's why we need timestamp based sorting on the number, basically the events data structure that were given. All right. So I think first we clarified that we need sorting. Cool. Second, so this is the first thing that we can basically uh, remove from the problem statements, problem statement and the constraints. Second thing is, let's say for a given time, one, so this is your one timestamp, uh, let's say 2, 3. Question never mentioned that the same timestamp will not be given multiple times. If you can see, question clearly said, basically clearly did not mention that the same timestamp event will not be given multiple times. So consider this. So first we are given message. Let's consider timestamp 1 and all. Cool. Second, let's say offline. Let's call this offline. Same timestamp and only the user ID 0, let's say. And in the system you had, let's say, 5 users, n equal to 5. So even for the same timestamp, you have multiple events. So if you processed this event first and this event after this, then what you will do is you are counting user ID 0 as online. Why? Because sorry, here if it was, let's say, if it was here, so here simply represents mark all the online users as mentioned. So if you process this event first, then you will consider 0 as the online user, but at same timestamp user ID 0 was marked as offline. So even for the same timestamp, you need to make sure that you process offline event first and then you process the actual events. All right. So we need to make sure that we do the reordering. Let's say, so this becomes offline 1, 0. So here it simply means at timestamp t equal to 1, we mark ID 0 as offline and then we process the message at t equal to 1 again. But here we say it's marked as, basically we need to mark all the online users. So if system had 4 online users before, 0, 1, 2, 3 and 4. So after this, we will mark this as offline. So when we process this event, we need to mark only the online users. So online users is this is online, this is online, and this is online, but this will remain 0. So what the answer will be 1. So this is your answer is going to be 1, 2, 3. सो आई थिंक यहाँ पे हमने दो चीजें कर ली क्लियर. एक लिख लेते हैं, आई थिंक यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा. फर्स्ट क्या करना है हमें? सॉर्टिंग ऑन द इवेंट्स, गिवन इवेंट्स, वाई टाइम स्टैम्प. सेकेंड, even
for the same timestamp, we need to make sure we process the offline events first and then the actual message events. So I think this condition is telling you how you should do the sorting and how you should actually keep the ordering of the elements after you sort. All right. Now, so I think first part हम लोगों ने clear कर लिया कि before we actually process how we should order the events that we are given. Now, second is how do you mark a user offline or online, and how do you keep a track of users? Basically, number of mentions for a particular user. So this is where I think either you can simply keep a vector, something like this, where id represents, so index of the vector represents the id of the user and the value represents the mentions. Mentions. ठीक है, तो ये तो तुम्हारा आउटपुट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आउटपुट वेक्टर हो जाएगा। अब हमें now we need to figure out two things: how to mark user offline, how to track it, and make sure when 60 seconds have passed we move it to the online users list. ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्या है? आई थिंक बस इतना ही है, दो ही चीज़ हैं। सो मार्क ऑनलाइन के लिए तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक सिंपल लेट्स से हैश सेट मेंटेन कर लेंगे। अगर तुम सी प्लस प्लस की बात करो तो हम अनऑर्डर्ड सेट मेंशन कर लेंगे, जहाँ पे वी जस्ट कीप द आईडी ऑफ द ऑनलाइन यूजर। सो लेट्स से 0 1 2 3, लेट्स से अगर ये आईडीज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है, तो वी जस्ट कीप them in the set. Now when a user is marked offline, we can do multiple things. So in my implementation, I'll show you the implementation in a bit, but I used two data structures to track the offline users. One, when was it marked offline? When? And second is who was marked offline. So एक, अब मुझे ये भी था कि बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प मुझे ये भी फिगर आउट करना है कि बिफोर आई प्रोसेस एनी मैसेज इवेंट, how many users before this timestamp, let's say t minus 60, because we need to give the buffer of 60 seconds. So how many users before t minus 60 seconds were marked as offline? So we need to mark them online somehow. All right. So I keep a set. Set is nothing but the sorted data structure, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम हमारी पहली की रहेगी एंड द सेकंड इज द यूजर आईडी. सो दिस वे हम लोग कर क्या रहे हैं, जो टाइम है ये सेट जो है मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन रहेगा. सो एवरी टाइम व्हेन आई प्रोसेस अ मैसेज इवेंट I will make sure that all the events or all the users who were marked offline are available in this set, and I can mark them online. How can I mark them online? If let's say current time is t current, all right. So if the set का जो first element है, it will give you the smallest element. Why smallest? Because we inserted t as the timestamp first. So this timestamp will be sorted by so this set will be sorted by the timestamp and then the id. So if let's say you have multiple users marked as offline on the same timestamp, so you will have timestamp id, same timestamp id, same timestamp id. We don't care about their relative ordering as long as we mark them offline. ठीक है.
तो when should we mark these users who are marked offline? When should we mark them online? When t current is greater than or equal to जो सेट में हमारे इवेंट्स पड़े हैं t सॉरी करंट इवेंट माइनस t सॉरी कर क्या रहा हूँ यार current event minus t is greater than t from set. ठीक, आई थिंक ये तो मैथ बिल्कुल ही क्लियर है. सो अगर लेट्स से तुम ये एक लाइन ले लो, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे तुम्हारा लेट्स से t है करंट. ठीक है, तो t करंट में अगर तुम 60 माइनस करोगे तो तुम कहाँ आ जाओगे? लेट्स से यहाँ पे कहीं. ठीक है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज x. और कोई यूजर जो था प्रीवियसली वाज मार्क्ड एज ऑफलाइन एट t इक्वल टू, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज t प्रीवियस. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? t करंट, और ये 60 सेकेंड्स पहले की बात कर रहे हैं, तो t करंट माइनस 60 is greater than or equal to t previous. In that case we say that this user, we need to make sure that we mark it online before we process any message event. बस बस इतना ही है. और ये हमने मार्किंग ऑफलाइन वाली कंडीशन हैंडल कर ली, 60 सेकेंड्स वाली भी हमने हैंडल कर ली. और अब क्योंकि हम लोग ऑनलाइन यूजर्स को एक सिंपल सेट में ट्रैक कर रहे हैं, तो वेन एवर वी लेट्स से रिसीव हियर कमांड, what we will do is we'll simply iterate over this list that we kept, which is of list of IDs of the users who are still online. So we just mark them in the answer array because we need to just increase the count of online users with the here command. Now when we get all, I think that's pretty simple. You don't care about online or offline, you just go ahead and mark all the users as mentioned. And the third one is ID based. So ID based is pretty simple. You simply parse the IDs from the list and then you mark them as mentioned. ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर हो गई है. अब मैं थोड़ा सा कोड पे दिखाता हूँ. अगर प्रॉब्लम समझ में ना आई हो यहाँ तक तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगा इसको आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा बेसिकली. ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे कोड पे. तो ये जो है हमारा कंटेनर, दिस रिप्रेजेंट्स द आउटपुट अरे. सो वी व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ वेक्टर of number of users and initialize the number of mentions as 0 for each user. ठीक है, अब ये जो है मैंने जो मेंशन किया था कि we will keep a set of timestamp and the ID, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऑफलाइन यूजर जब भी होगा, ऑफलाइन यूजर जब भी होगा तो उस यूजर का टाइम स्टैम्प ट्रैक करेंगे कि वो कब यूजर मार्क हुआ था एज ऑफलाइन, एंड वी विल ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ द आईडी. ऑनलाइन यूजर्स के लिए हम लोगों ने बोला था विल सिंपली कीप अ ट्रैक ऑफ some set where we can just have the IDs of the users who are available online. And this is the ID mapping. I think I'll call this as ID and time. So this keeps a track of when a user is marked offline, when was the time user was marked offline. That's it. ठीक है, तो ये तो हम लोग ट्रैक करने के लिए यूज करेंगे. नाउ इनिशियल कंडीशन वाज mark all the users as online before you start processing the events. So what we did, we marked all the users as online, and this position represents what? The IDs of the users. Now again, if you remember the condition here, did I remove the sorting condition? No. So I mentioned here we need to do sorting. We need to do sorting based on timestamp first, and if even for the same timestamp you can have multiple offline events, so you need to process the offline events first.
So what do we do? So if you come here, तो जो सॉर्टिंग में अगर सी प्लस प्लस में तुम लोग कोड करते हो तो सॉर्टिंग में यू कैन पास द लैम्डा हाउ यू वांट टू सॉर्ट. सो हाउ डू वी वांट टू सॉर्ट? बिकॉज A1 is the basically the event's first position. So event has three elements like mentioned in the problem, and I think second, which is first index, represents the timestamp of that event. So अगर हम लोगों के दोनों टाइम स्टैम्प जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, that means it's the case of same timestamp. That means for the same timestamp you have multiple events. These could be message events or these could be message and offline combined. All right. So if A0 is offline, that means कि timestamp is same, but now this element being compared has offline event. So we need to make sure we return true so that this offline event comes first. और अगर दोनों ऑफलाइन नहीं है, मतलब अगर दोनों का टाइम स्टैम्प सेम नहीं है, then we just care about the time stamp. So whichever time stamp comes first, we need to insert that. And if there was an event which was which had offline, then we need to make sure that that event comes first. That's it. So यहाँ पे हम लोगों ने सॉर्टिंग कर दी इवेंट्स की. नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रोसेस करेंगे. सो जीरोथ इंडेक्स पे तुम्हें कमांड मिलेगी, वेदर इट्स अ मैसेज इवेंट और इट्स अ ऑफलाइन इवेंट. इंडेक्स 1 रिप्रेजेंट्स द टाइम स्टैम्प ऑफ दैट इवेंट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जादू कर रहे हैं. दिस इज वेयर वी आर डूइंग द मैजिक. मतलब और भी जगह हैं, बट यहाँ पे भी हम जादू कर रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या किया कि basically we'll do the emptiness check on the set, and here what we do is current timestamp minus 60. If it's greater than or equal to, let's say, previously marked offline users timestamp, then we can be sure that this user can be marked as online. क्योंकि ये जो सेट है हमारा ऑफलाइन यूजर्स का, इट्स सॉर्टेड बाय टाइम फर्स्ट and then the ID. So smallest time will appear first. That's why we always compare with the first element or the first pointer of that element. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन ये वाली है कि अगर टी करंट जो है हमारा करंट इवेंट का जो टाइम स्टैम्प -60 इज ग्रेटर देन प्रीवियसली मार्क्ड ऑफलाइन इवेंट, जो कि है ये वाला केस, then we say this user needs to be marked online. तो हम लोग सबसे पहले उस एलिमेंट को ले लेंगे, मतलब before we remove this element, then we basically remove this from the offline user set, and then we were tracking the time of that user who were marked offline in this hash set or unordered map. No, so ID and the timestamp was when was the user marked offline, because now this user is no longer offline, so we need to remove this. We need to remove this user pair from the set as well, and then we need to put this ID in the online users. Remember, in the online users set we were keeping the IDs of the offline online users. So this is pretty simple. So we keep on processing the set and we remove all the users from this set who should be marked online. And so we remove them from the offline data structures that we keep, and then we move the ID back to online. So this is where what we're doing is, before we process actual event, we process the offline or online activity. If a user is marked offline or user is marked online, then user basically becomes online. Then we make sure before we process the event, it is marked as online. I think message command is fairly simple. If uh, if the command says all, what do? We mark all the users as mentioned. If message says here, what do? We simply mark all the online users.
because right now at this point we don't need to track or we don't need to find out how many users are online. We simply have all the IDs of the online users available in this unordered set. So we just iterate over these IDs and simply mark them as mentioned. And this is where we need to parse the IDs. If let's say these two are not mentioned, in that case you will have the individual IDs available. So what we do is we simply tokenize based on space. So we have individual ID and then we pick what, because ID is every mark represents this. No, if individual IDs are mentioned, ID1, ID0. So we pick the integer value starting from index 2, because index 0 and 1 represents I and D. So we don't care about that. We care about the actual integer ID. So that's why we pick the substring starting from at index 2. All right. Now when a command is for offline event, what do we do? First we parse the ID. So let's say अगर ये वाला case होगा, so if this offline event comes, so we need to parse the ID first. All right. So we parse the ID. If this user was marked offline before, so अगर हमने इस user ID को अपने previous offline data structure में देखा है, then what do we do? We just need to update the timestamp. All right. But the problem is, what the problem is, uh, the main problem is that in our set, what we were keeping the time and the ID, है ना? So अगर same user is uh, marked what offline again, although क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है ऐसा, आई थिंक मैंने ज़्यादा ही सेफ्टी चेक डाला है. क्वेश्चन में उसने बोला है इट इज़ गारंटीड दैट द यूजर आईडी रेफरेंस्ड इन द ऑफलाइन इवेंट इज ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ इवेंट अकर्स. तो ये कंडीशन मेरे हिसाब से रिडंडेंट है. मैंने उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था जब मैं कोड कर रहा था, बट आई थिंक दिस विल नेवर हैपन हियर. व्हाई? बिकॉज इफ an offline event comes, then for sure the ID mentioned in that event was online before. So this case will never happen. So what we'll do is we simply insert this timestamp at what time this user is marked as offline, and then this ID. And this ID simply represents the user ID. And we keep on doing it again and again and eventually return the container. देख लेते हैं एक बार. ठीक है, तो टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं. पास हो गया. ठीक है. एक बार मैं आगे ये करूं क्या? मेरे को ये लग नहीं रहा है. लेट्स से इस यूजर आईडी वाली चीज को हम टाइम ट्रैक करते ही नहीं है, तो क्या पास हो जाएगा? ओके, लेट मी सी इफ इट passes. Wow. Okay. All right. So we don't need to actually care about this time. Uh, so ऑल राइट. क्योंकि मैंने उस टाइम पे आई थिंक लास्ट कंस्ट्रेंट पढ़ा नहीं था ठीक से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. आई वुड हैव बीन मोर केयरफुल. मॉर्निंग का टाइम है ना यार, तो मॉर्निंग के टाइम पे दिमाग उतना सही से काम करता नहीं है. स्लीपी स्लीपी सा फील होता है, दैट्स व्हाई. ठीक है, तो अब हमें बस यहाँ से ऑनलाइन से रिमूव करना है, और ये ऑफलाइन में हमें कभी सर्च करके डिलीट करने की आइटम ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज items which have become online will always be at the first pointer of the set. So we don't care about this. Let's say searching by time and then ID. Let's see. Did it pass? All right. Cool. ठीक है. अगर आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही.
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाकी अगर ये कोड चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूँगा तुम लोगों को अगर इसको रेफ़र करना है। बट आई वुड हाइली रिकमेंड you try to implement on your own, because we try to, let's say, solve the problem. So try to solve the problem on your own first, and if you, let's say, are stuck, then you can come back to the video and just refer what was what is the problem that you are, let's say, overlooking or missing. You don't have to, let's say, copy paste the whole code as is, because the whole point of doing lead code is to learn, is to solve the problems on your own. ठीक है? बट इन केस तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो यही कोड चाहिए है, देन यू कैन बेसिकली कम टू माय प्रोफाइल, और वहाँ से तुम लोग जो है ये कोड ले सकते हो। बट मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है? इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। डिज़ाइन वीडियो का मैं अपडेट दे देता हूँ। डिज़ाइन वीडियो का मैंने टॉपिक फाइनलाइज कर लिया है। Now I need to explore the system first, because before I discuss the problem, I need to, let's say, explore design first myself. मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को बताते टाइम पे मैं कुछ गलत बोलूं. That's why I try to build the system on my own, and then I discuss that system with you. Obviously उसके बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई थिंक फर्स्ट लेवल चेक तो मैं खुद ही कर सकता हूँ. ऑल राइट, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।